हेलो दोस्तों, वेलकम टू BTC strategy episode 17 with Digant. Welcome everyone जो भी अभी आ रहा है ज्वाइन करने. We'll discuss so much about Bitcoin and treasury things. Bitcoin की उथल पाथल तो देखी होगी आप सबने अभी लास्ट वीक जस्ट 4 दिन पहले बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया. ऑल टाइम हाई वाज अराउंड $126,000 just 4 days ago, 6th October, and today is 11th October. Uh, in so many exchanges, price even touched 103K, 102K, but currently price is trading at 112K, 113K. And liquidation wise, dollar wise, Are you sharing the screen, Bhavik? If you are, I then will, we can't see. I will, I will just share it now. Okay, okay. So liquidity wise, liquidation wise, dollar wise, सबसे अब तक का सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ है. Hmm. That is $19 billion. बट या मैं आपको भी ये तो बिटकॉइन का प्राइस दिखा रहा हूँ मैं डैशबोर्ड क्लार्क Hmm. मोडी पे. सो याद हो कि जब भी फ्यूचर वालों को फ्यूचर बर्बाद हो गया रातों रात या थिंक फॉर एवर. हेलो भाई, आफ्टर सो मेनी डेज, हाउ आर यू? हेलो राहुल, हाउ आर यू? Hmm. याद हो कि जब भी बहुत याद हो कि जब भी यू भाई. तो या फ्यूचर वालों का फ्यूचर बर्बाद हो गया रातों रात, पूरा लिक्विडेशन किया है. एंड नेक्स्ट स्टेप्स देख रहा था, $19 बिलियन लिक्विडेशन हुआ है इन डॉलर टर्म्स. बट अगर आप मार्केट कैप वाइज और परसेंटेज वाइज अगर चेक करते हो, सो दैट इज उतना नहीं है. मतलब कि एक मेरे पास डाटा है, कोविड का जो क्रैश था उस समय पे कोविड क्रैश में लिक्विडेशन हुआ था $1.2 बिलियन, बट मार्केट कैप तब $3 बिलियन था. सो द लिक्विडेशन वाज 0.4% ऑफ द टोटल मार्केट कैप, 0.4%. सो उसके बाद द बिटकॉइन मेड लो एट 10310, sorry, sorry, at that time bitcoin made low at $3,000, $4,000. Even जो bitmax exchange था, authorized था, they even stopped trading for a while because otherwise it was going to straight to zero. There was no buy side liquidity. It happened. जैसे हमने कोविड में देखा होगा, वो भी देखा था कि इवन प्राइस ट्रेडेड नेगेटिव. सो Hmm. टाइम के लिए when fear enters, people just become irrational, and there are algorithms होते हैं. So there are buy side और buy orders ही नहीं होते, लेकिन sell orders trigger हो जाता है. So अब I don't know how does it work, but uh, there are many articles कि कोविड के टाइम पे FT बिटमैक्स में तो प्राइस जीरो चली जाती, बट ठीक है. So that at that time the liquidation was 0.4% of the total market cap. COVID crash 2020 March. Then उसके बाद 20 it made bottom around $3,000, and after 18 months it made a top in November at $69,500. So around 20 times वहां से गया था. Then 2022 के नवंबर में दूसरा क्रैश आता है FTX का, जब FTX कलेक्ट हुआ था. that उसमें लिक्विडेशन हुआ था $1.6 बिलियन. रिमेंबर दैट कोविड क्रेश लिक्विडेशन वाज 1.2, FTX का लिक्विडेशन Hmm. वाज 1.6, बट मार्केट कैप उस समय पे 1 ट्रिलियन था. सो परसेंटेज वाइज इट वाज 0.16%, 0.16% ऑफ द टोटल मार्केट कैप. Still, it was big, and it exactly marked the bottom at $15,600, and now price is then it touched all-time high after two and a half years. After 2.5 years, so Hmm. मुझे यहाँ पे 2.5 years का कुछ दिख रहा है. 30 month, अराउंड 30 month. 2020 मार्च में हुआ, देन 21, 22, एंड उसके 6 month बाद एग्जैक्टली, हाँ, 30 month बाद FTX हुआ. अभी कितना टाइम Hmm. हुआ? अभी 33 month हुआ है उस नवंबर के. Hmm. 33, दिस इज 33rd month, 33rd और 34 month. सो वही भाई 33 month बाद फिर से अगेंस्ट हुआ है. इस बार का जो लिक्विडेशन है वो $19 बिलियन है. कोविड का 1.2 बिलियन था, मार्केट के 300 बिलियन. इस बार का लिक्विडेशन इज $19 बिलियन, बट मार्केट कैप इज 4.2.
So again, the total percentage where liquidation was around 0.45%. So it is the largest. It is still largest. Uh, मैं इसको कमेंट में तुम दोनों नहीं डालना चाहता बट आई डोंट नो जैसे दिखा पाऊँ कि नहीं बट ठीक है. So percentage wise it was 0.45% of the total market cap. So biggest liquidation ever in dollar terms and biggest liquidation ever in percentage wise 0.45%. हम्म And just last week अक्टूबर जब स्टार्ट हुआ तो लोग कैसे बुलिश हो गए थे, क्रेजी बुलिश हो गए थे. जो जो पम्प आया था 108 से सीधा 120-25 और सारे फोरकास्ट में लोग बात कर रहे थे कि अब तो इट कैन इजीली क्रॉस 150 इन अ वीक बाय द एंड ऑफ दैट वीक. उल्टा हो गया. एंड ऑफ द वीक में हम्म 103 चला गया. बट हाँ यही होता है. तो देखते हैं. बट साथ साथ ये जो टाइम है ना, ये एक्चुअली वही टाइम है जहाँ पर बिटकॉइन टॉप टू टॉप आप देखोगे ना, बॉटम टू टॉप तो 1060 डेज के आसपास टॉप बनाता है. तो ये वही टाइम है हम्म 4 ईयर साइकिल का. तो क्या वो भी वो फॉलो होगा, मतलब क्या इज इट मेजर टॉप? मुझे लग रहा है कि शायद मेजर टॉप नहीं है यहाँ से. मेजर टॉप तो नहीं है मेजर टॉप, क्योंकि सितंबर में रेट कट हुआ है एंड इस साल बिटकॉइन जस्ट पिंग पोंग हुआ है 75 से 120 के बीच में. सो अगर ये मेजर टॉप बना देन कुछ तो लाइक इतना मनी प्रिंटिंग हो रहा है तो इफ बिटकॉइन इज नॉट पंपिंग देन व्हाई, लाइक हाउ, क्या है लाइक अगर अभी पंप नहीं किया तो बाद में कितना करेगा. सो या किंग फॉर नाउ विल गो टू 150 दिस और नेक्स्ट मंथ. या बस मैं यही बोलने वाला था कि आई लाइक जैसे कोविड में वी शेप रिवर्सल आया था एक मंथ बाद, एफटीएक्स में वी शेप रिवर्सल आया था. यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि वी शेप रिवर्सल आ सकता है, आ सकता है. बट या स्पॉट होल्डिंग स्टे हम्बल स्टे एक्सेस, अगर इतना नीचे मिला है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी है ना. ट्राई टू अर्न मोर स्पेंड लेस एंड स्टे हम्बल स्टे एक्सेस. बाकी एंड जनरली इट इज हेल्दी. जब भी लिक्विडेशन होता है इट इज वेरी मच हेल्दी फॉर द मार्केट. एंड इसके बाद हमें वन साइडेड मूवमेंट दिखती है, वन साइडेड मूव दिखती है लंबे टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक. सो दो चीज फिट हो रही है. एफटीएक्स एंड कोविड के बाद, कोविड में जब हुआ तो 12 महीने 18 महीने बाद इट वेंट 20 टाइम्स अप एंड देन मेड अ टॉप. एफटीएक्स में collapse हुआ देन 20 टाइम्स गया, सॉरी 7 टाइम्स गया एंड देन मेड अ टॉप. सो ये टॉप बना, बट ये टॉप कितने टाइम के लिए बना वो दैट इज द क्वेश्चन. कि टॉप तो दैट वाज अ टॉप, डेफिनेटली टॉप, बट क्या वो टॉप एक साल के लिए रहेगा या फिर 2-3 महीने के लिए रहेगा? मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने मैक्सिमम रहेगा. बिकॉज हम यही देख रहा है 2-2.5 साल से, ये वो 4 साल वाला साइकिल मेरे ख्याल से प्ले आउट नहीं होगा. बिकॉज जैसे ही 23% डाउन आएगा लाइक एवरीवन विल जस्ट स्टार्ट बाइंग इट, है ना. मेच्योर है बिटकॉइनर्स आर मेच्योर, लाइक तब नहीं था, अब सबको समझ है. लाइक हम्म लाइक प्रे करो जाए 100 के नीचे, 90 के नीचे, 80 के नीचे, है ना. तो यही फायदा है कि इफ यू आर इनटू लाइक हियर फॉर लॉन्ग टर्म देन इट वोंट मैटर टू यू. एंड हम्म ट्रेजरी कंपनीज विल स्टार्ट ट्रेडिंग, काफी नीचे स्टार्ट ट्रेड हो सकती है. बट कल क्रैश आया, मेटाप्लेट गोज अराउंड $3.4, एमटीवी लैक्स. हम्म एमएसटीआर भी कुछ ज्यादा नहीं रहा. बट मेजर जो ये डंप आया है इट केम आफ्टर द मार्केट आवर. आफ्टर द तो अब क्लोज हम मंडे, हाँ क्लोज ऑफ द मार्केट एंड वो वीकेंड आ गया. तो मंडे को जनरली इट्स रूल ऐसा होता है कि इफ फ्राइडे क्लोज वीक, बट पूरे पूरे जो 9 डेज थे वो अगर 9 में से 6 डेज अगर बुलिश होते हैं मंथ के, हम्म तो आफ्टर 9 डेज एक डंप आता है. देर इज एक है दैट इज थियरी. एक डंप आता है एंड फ्राइडे को डंप आया तो मंडे को कंटिन्यू होता है वो, एंड मंडे को ही वो बॉटम बनाता है. सो आई गेस मंडे को अगर बॉटम नहीं बनाया, ट्यूसडे को अगर वी से नहीं दिखा, देन 3 मंथ्स के लिए आई थिंक बिटकॉइन इज गोइंग टू 80,000 90,000. बट ठीक है, तो प्राइस की बात काफी हो गई. जनरली प्राइस की बात हम आई थिंक ये करने लग गए. अब ज्यादा प्राइस की बात करते नहीं थे बट करने लग गए. हम्म या आप बताइए.
ये बेसिकली मेन इसकी वजह से ही हुआ है ना, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स, 100% टैरिफ्स ऑन चाइना, इतना एडवर्स रिएक्शन। कह सकते हैं, बट मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। मैं जब 26 सितंबर को जब बिटकॉइन गिर रहा था ना, तभी मैंने 2 3 दोस्तों को बोला था कि बिटकॉइन कैन गो 103 104। हम्म। ठीक है, लेकिन वो तब बॉटम बना के 126 चला गया, तब टच नहीं किया। हम्म। बट फिर से अभी आया यहाँ पे, सो देर वॉज सम टेक्निकल 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 में देर वॉज सम मैग्नेट एट 103 प्राइस। देर वॉज सम मैग्नेट, Yes, सो वो yesterday's आया। fall was around 105 or 104 something. हाँ, So एंड बाइनेंस basically, में 102, बाइनेंस में 102 था। अच्छा, सो या सो मतलब ये है कि वो आना होता है, बट कब आता है वो, कभी मार्केट जस्ट कैसे भी, इट इट जस्ट फाइंड्स अ रीजन। और हम्म, ट्रम्प ने जो पोस्ट किया था, दैट वाज द मेन थिंग। एंड कुछ चीज ये भी था कि जब बिफोर ट्रम्प ने जो पोस्ट किया, उसके जस्ट आधे घंटे पहले किसी ने शॉर्ट भी ओपन किए थे बहुत सारे। yeah, तो yeah, ये yeah. इनसाइड गेम भी हम्म, है। कुछ कुछ एटम एटम जो कॉइन था वो 0.01 डॉलर टच किया है। तो काफी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म्स बोल रहे हैं कि बैंक हुआ है, लॉस हुआ है, काफी ट्रेडर्स भी लॉस किए। हाँ, सो बट बिटकॉइनर्स आर स्टैंडिंग स्ट्रांग, रियली yeah. स्टैंडिंग सम 20% डाउन जाके अभी अगेन लाइक 103 102 टच करके 10112 रहना, इट शोज द स्ट्रेंथ। गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, अभी भी गोल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। ईयर टू डेट में बिटकॉइन इज अप, लास्ट 3 to 6 मंथ में गोल्ड इज अप। बट 1 साल 2 साल 3 साल चले जाओ तो बिटकॉइन इज अप। 4 साल में 4 ईयर कंपेयर करो तो गोल्ड इज अप। 6 ईयर कंपेयर करो तो बिटकॉइन इज अप। सो बिटकॉइन गोल्ड की कंपटीशन है, बट व्हेन गोल्ड मेक्स अ टॉप, मनी सीधी बिटकॉइन में रोटेट होनी है काफी। एंड गोल्ड इज एट $27 trillion। सो I don't think this is a time to be bullish. Definitely not, because बॉटम से भले ही बिटकॉइन 125 गया है 15 से, बट लास्ट टॉप से टॉप इट वाज ओनली 2x। एंड Yeah, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी। सो ये वही है मेरे ख्याल से कि जब लोगों को सब पता लगने लग गया, तो लोगों को तक 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 ऊपर नीचे करके इतना लोगों को डरा देंगे कि स्पोर्ट वाले तो तुम, इन्होंने देखो फ्यूचर्स को तो निकाला 19 बिलियन। फ्यूचर्स की मनी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई। फ्यूचर्स में कर सकते हैं, दिस इज लीगल। ट्रम्प ने पोस्ट किया, उससे पहले तुम शॉर्ट ओपन करो मार्केट वालों, एंड देन पूरा मनी इधर से इधर करा दो। तो दिस इज लीगल, दिस इज इलीगल, बट इसमें तुम कैसे फाइंड करोगे क्यों हुआ? ये तो मार्केट में हुआ है। बट ये समझो कि आगे जाके ये भी टाइम आएगा कि स्पॉट होल्डिंग्स भी इलीगल बताई जाएगी, या फिर ट्रेजरी कंपनीज को इतना शॉर्ट कर करके एक्विजिशन किया जाएगा। नाका, एसएसटी, हालत देखो इन सबकी। एंड सिमिलर, और क्या बोलते हैं इसको, वो हो रहा है, ये इट इज हैपनिंग, सेंट्रलाइज हो रही है। सिमिलर इसमें मिल गया, कल जाके एमएस शेयर को इतना शॉर्ट करे कि एमएस शेयर उठ ना पाए, and बाकी मार्केट के लोग आके देन दे एक्वायर इट, है ना? सो ये लोग actually, तुम्हारे बिटकॉइन के this पीछे आ गए thesis हैं। is has already been discussed by Matthew Crater. Like how can these things can be done or could be done? Like तो be a, let's say, big hedge fund short these Bitcoin treasuries to a lot extent, such that there is no mNAV premium, and then there is nothing which they can do. And after that, maybe, as you are trying to say, mergers and acquisitions will come. But let's see where these things go. ओके, हो सकता है सर। हाउ इज माय वीडियो क्वालिटी? इज इट लाइक बगी, Uh, लिटिल बिट बगी? it's good, I think. It's not lagging. ओके, ओके, अच्छा ठीक है. है। आई एम स्ट्रीमिंग फ्रॉम माय ओल्ड लैपटॉप, सो थोड़ा Hmm. इट्स वेरी ओल्ड लैपटॉप। Yeah. आई गेस कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? Yeah, yeah, एक्चुअली yeah. मैं एक साथ सारे लिंक खोल भी नहीं सकता, बिकॉज Hmm. लैपटॉप क्रैश हो जाएगा। ठीक है. तो मैं एक एक खोल रहा ये हूँ ये। ठीक. या अच्छा. ठीक है। So वॉलेटिलिटी अक्रॉस द डिजिटल स्टैक, ठीक है, या आप सुन। here, Bhavik, if you can see like what Sailor is trying to build, least
amount of volatility has been seen in STRC. So far, like the goal of STRC is basically to um, like low volatility because it needs to be stable around 100. So as far as this graph is concerned, or like 5% volatility, if you compare this with currencies, then it is high. But I mean, we started from here, so it makes sense. But let's see like where STRC's volatility goes into the long term. Hopefully, if we are closer to 1 to 3%, हम्म, 3%, then it will be very beneficial for MSTR. हम्म। एक बार वो आ भी गया, like when Bitcoin went all time high, Yeah. STRC went Mm. above just 100, and so I guess मंथ में अच्छा स्टार्टिंग किया है। लोग अक्टूबर के लिए ज्यादा बुलिश थे, सितंबर के लोग बेरिश थे, सितंबर ग्रीन क्लोज हुआ, अक्टूबर के लिए बुलिश थे, अक्टूबर कैन क्लोज रेड, एंड दिस इज अच्छा अक्टूबर का ओपनिंग इज एट, अक्टूबर ओपनिंग इज एट अराउंड 114 के, सो Mm. लेट्स सी कैसे होता है नवंबर दिसंबर, एंड एस टी आर सी। मैं सच बताऊँ, आई एम फीलिंग वेरी बुलिश, फ्रेश एंड बुलिश, लाइक फ्रेश एंड बुलिश, फ्रेश बुलिश, फ्रेश बुलिश, फ्रेश बुलिश। सही है एक I mean from a contrarian perspective it's good to be bullish around this time. हाँ, ये टाइम पे बेरिश नहीं होना यार, होना था तो 4 दिन हाँ. पहले होना था, जब वो 125 था, 126 था, दैट वाज द टाइम। अभी लाइक एटलीस्ट डोंट बी बेरिश, बी न्यूट्रल एटलीस्ट, दिस इज Hmm. नॉट टाइम टू बी बेरिश। And the thing which you were telling before this, analyzing Bitcoin's liquidations. So it's still we are at good levels. Like even though such large liquidations have happened, but still we are at 111. So यस, it's good from a maturity point of view for Bitcoin. या, सो आई मिस वन थिंग जो आपने बताया कि इवन आफ्टर द बिगेस्ट लिक्विडेशन इन डॉलर टर्म्स, बट ठीक है, Hmm. neglect the dollar terms, biggest liquidation in like percentage wise, compared to the market cap, biggest ever, Hmm. Bitcoin only dropped uh, 18% and recovered 10%, so now it is down at 10% only। कोविड में जब क्रैश हुआ था, वो 10,000 से 3,000 आया था, that was 68% crash, and it took 3-4 days to recover 30-40%, and 1 month in the 1 week के बाद it was same level। FTX when it crashed from 25 to 15, so that was again 40, 45% crash। so इस बारे में, yeah, this is strength, this is the real strength, this is the strength, क्योंकि Yeah. इतनी हालात लिक्विडेशन में इफ बिटकॉइन अगर ये 90 के नीचे जाता ना, 90 देन वो बेरिश है, वो बेरिश, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, बट राइट, इतना बड़ा लार्ज लिक्विडेशन, बट प्राइस इज जस्ट बिलो 10% ऑफ ऑल टाइम हाई, सो दैट इज रियल स्ट्रेंथ, दैट इज द स्ट्रेंथ, Yeah. ये दैट इज द सिग्नल, दैट इज द रियल सिग्नल इन द नॉइस। ठीक है, So, what we will try to do in this session is to speak about digital credit, which Michael Saylor and other Bitcoin treasury companies need to do because currently they are trading at nearly one time SNAV. So, unless and until a treasury company gets some leverage on its balance sheet, it's hard to trade at a premium. And if you do like if you are not being able to trade at a premium, then whole game doesn't make sense of becoming a pure play Bitcoin treasury. So for to you to have this premium, you have to show the market that we can take leverage. But so far, in the whole of like treasury company space, we are seeing like Meta Planet's BTC rating is around 126 times.
strategies like their assets compared to their liabilities is in the total capital stack, the total liabilities is around only 15%. So, it's a good time, and we have to see how these preferreds turn out to be into the future. Here, what Jeff Walton has tried to explain in this tweet is like, um, if you can open this first image, this is the current kinds of preferreds or credit bonds which are available right now in the market. See the complexity of the structure. Like this is first brand. I mean, this is a highly complicated structure of balance sheet. When you compare it to strategy is simple. They just have bitcoins on the asset side and preferred and convertible bonds on the debt side. No of balance sheet, no nothing, no through a special purpose vehicle or some company registered in a bankruptcy remote situation. Nothing like that. You have clean, simple, plain perpetual preferreds out there in the market. Um, so when you compare this to strategies preferred, it's like no, there is no comparison by a large extent. Also, if you to take a look at the liquidity available for strategies preferred, it's way higher. It's way higher than all other products out there in the market. Also, if you can see here in this current average BTC rating for their debt and pref is around 5.2 times. So for $1 of debt, they have $5 of Bitcoin in their balance sheet. आपको एक चीज So पता yeah, है? या सो जैसा व्हेन यू से दिस BTC रेटिंग, सो मुझे आई इट अगेन रिमाइंडेड मी ऑफ द one big post of health in it. Hmm. My audio is okay? yeah, it's good. Hmm. Yeah, I can hear you. ओके ओके ओके, ठीक है. या सो हेल्थ ने बोला था कि इन फ्यूचर लाइक बिटकॉइन वोंट बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी. ऑन चेन, ऑन चेन will not be used by everybody, but it will be used between banks and large Hmm. institutions. और ये बोला था कि the the normal transactions, like transaction of a coffee, Hmm. like, वो इतना रेयर होगा जितना उस समय पे बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन रेयर थे. सो मतलब कि वो कहना चाह रहे थे कि institution banks will use bitcoin, but Hmm. उन्होंने ये बोला था कि there will be time when there will be banks which will have 100% or maybe some fraction of reserve of Bitcoin. But यहाँ पे we are seeing not 100%. Over It is collateralization. 100%, Yeah. starting from 78%. So uh, as Bitcoin becomes big and big and big, उसका volatility dampen होगा, Yes. and they उसकी BTC rating will decrease. They will it means कि STRC, STRK, STRF, STRD, they will eat up entire fixed income market. And जो भी है fixed income market है ना सारा ये, right? Yeah, ये yeah, सारा fixed income market है. yeah. So वो खाएंगे. And if you've seen the recent podcast of Peter Dunwich on what Bitcoin did, so like he is really he's very old age guy, very experienced. He manage large funds and helps in self custody. By वो बोलते हैं, he only says कि tens and tens of quadrillions of dollars Bitcoin can eat. So one quadrillion is 1,000 trillion. Tens and tens of quadrillion मतलब कि 10,000 ट्रिलियन डॉलर, 20,000 ट्रिलियन डॉलर उतना जा सकता है. इंडिया आई थिंक बिटकॉइन हैज कैपेसिटी से, लाइक इसका मतलब कि स्ट्रेटेजी के पास जितने बिटकॉइन है उतने तो वो
फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट इश्यू कर ही सकता है। तो उनके पास Hmm. कितने बिटकॉइन है, 70-80 बिलियन के, तो उतने तो फिक्स्ड इनकम वो कर ही लेंगे। बट अब वो जब बड़े होंगे 78, जब इफ बिटकॉइन गोज 2x, तो उनका वो भी फिर डबल होगा। सो जो दिस 140. रेटिंग विल कम डाउन, दिस रेटिंग विल कम डाउन एंड द मार्केट। Rating will go up. The leverage ratio will come down. अच्छा, लेवरेज, व्हाट इज रेटिंग? Yeah. व्हाट इज Rating रेटिंग? is, for example, if you have $1 of debt, and if हम्म BTC rating here, if you can see total debt plus pref, it's 5.2. So for every $1 of debt, you have $5 worth bitcoins in your balance sheet. हम्म। ओके। So that सो is वही basically बोल रहा हूँ, BTC. सो दैट इज 5x ना, मेरी आवाज आ रही है? 5x, yeah, सो वो 5x हुआ ना मतलब, या फिर yeah. वो वही मैं बोल रहा हूँ कि इट विल कम टू 1x। लाइक जितनी डेट है Uh, उतना ही बिटकॉइन होंगे उनके पास, when they become banks। when they become banks, okay. Hmm. हाँ, so like उस टाइम पे बिटकॉइन विल बी ट्रेडिंग एट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। सो दिस बीटीसी रेटिंग विल Bu- गो डाउन। लाइक अगर Um, 1x, so, so अगर you 1x, expect these products getting like crazy attention in the market because हाँ unless and होना until पड़ेगा, that happens, hmm, होना पड़ेगा, अदरवाइज लाइक अदरवाइज बिटकॉइन कान, अदरवाइज बिटकॉइन वोंट बिकम लाइक व्हाट वी थिंक इट विल बिकम, इट वोंट बिकम, hmm, it has to। So and one x, one BTC rating will be also considered good, yeah. because बाकी लोग But देखो करंट, अभी बैंक के पास कितना रिजर्व है? 5%। लाइक नॉट वन एक्स, private, लाइक नॉट वन, 0.05, hmm. 0.05। But for now, I don't think strategy will be targeting one हाँ, times because no 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 um, no। currently they are not able to generate cash flow from this available bitcoins which they have. So हम्म, unless and until they figure out some cash flowing business from this bitcoin holdings, it's better to be around 20, 30, 40% of total capital. हम्म। So now we are in the time कि जिसमें बिटकॉइन कैन टर्म 70%, Yeah, hmm, yeah, है ना? agree. So at least for STRC all these products to get fully backed, BTC Hmm. rating should be at least 3, right? Yeah. At least 3 Hmm. होनी चाहिए। So 3 is Yeah, the yeah, bare yeah. minimum right now, but it will decrease, but they are giving 50, 100, 10, 20 कुछ भी। Hmm. but जो मैं बोल रहा हूँ, it will happen within like 10 to 15 years, not if Hmm. not with strategy with then any other companies, but ये है कि वही है 100% reserves, and even less than 1 के भी chance है, there will be some products uh, which will have BTC rating of like less than 1, but it won't go Hmm. because they only have to pay dividends, right? Yeah. So when जब वो पता चलेगा कि like Bitcoin can't go to zero, तो Bitcoin can't crash even 5%। अभी हम फियाट में जी रहे हैं ना, फियाट में बहुत वोलेटिलिटी है, कोई एक बंदा आके ट्वीट करता है मार्केट क्रैश है 20%, 10%। Hmm. सो वो फियाट के कारण है, पूरा लेवरेज लेवरेज पे लेवरेज पे लेवरेज है, लाइक 100 1% times leverage. मनी। हाँ, इतना ही मनी एग्जिस्ट करती है, बाकी सब वो है, तो थोड़ा मूवमेंट हो जाता है तो पूरा मार्केट हिल जाता है। लोग हेज फंड खत्म हो जाते हैं, बैंक लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाती है, लाइक 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 सुसाइड होता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, 2008 में भी सब खत्म हो जाता है। So, but I think Bitcoin will make the financial market very robust. It won't allow this much um, Leverage. leverage. It won't allow, like थोड़ा तुम leverage लेने जाओगे तुम खत्म हो जाओगे। It won't allow because there is no Federal Reserve जो उनको बचाने आएगी। तो ये Hmm. तब तक ये भी है जब तक Federal Reserve बिटकॉइन से बड़ी है, बट एज बिटकॉइन बिकम्स बिग तो ये सब खत्म हो जाएगा ना। Yeah. बिटकॉइन इज 2 ट्रिलियन, वर्ल्ड इज 1000 ट्रिलियन। सो Hmm. लाइक वो देखो जब बिटकॉइन इज 10 ट्रिलियन, वन इज 1000, एंड जब वो देखो जब बिटकॉइन इज 100 एंड वर्ल्ड इज 2000, तो वो रेशियो जब बिटकॉइन विल बी द लार्जर एंड लार्जर परसेंटेज ऑफ द एंटायर मार्केट, देन स्प्रेड की ताकत कम होगी एंड देन बिटकॉइन Hmm. विल टेक ओवर। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट करूँ ना, नेक्स्ट पोस्ट, ठीक है। Yes. राहुल का कमेंट है, एच टी आर सी गिव 10% डिविडेंड अ मंथ,
सो आप बता दो. No, no, it's annually. month में नहीं है. या सो इट्स 10% एनुअली, बट हाँ. मंथ में हर मंथ थोड़ा थोड़ा मिलता है. सो कम लाइक हाँ. 0.9%, 0.8% So मंथली मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड payout is monthly, but like it's 10% per annum, similar to what FDs do. Like in FDs in India, we get 6-7%, but like क्वार्टरली का. we get some monthly. What do we say? मंथली Monthly. आता है, क्वार्टरली आता है. किसी किसी बैंक क्वार्टरली में आता मंथली आता है, किसी किसी बैंक में क्वार्टरली आता है. है. ओके ओके. Yeah, Okay. So the next thing is, nice. This drawdown is one of the most painful investment turnarounds I have experienced. So it is about treasury companies, you know, for treasuries. example, yeah, holding at a loss while everything else release. S&P 500 सब भाग रहा था. Fear and doubt creep in. Risk management contained the bleed, but it still hurt. Market sentiment and short sellers have dominated the past 2 months. Yeah, making this the toughest time, but stress tests are part of the journey. Nice. The thesis remains. If BTC is the superior and fastest among all the asset companies using infinite leverage to acquire it will outgrow others. Sentiment shifts between greed and fear, but as long as the thesis holds, the business model endures. The fittest will emerge stronger. Yeah, definitely, but definitely, definitely. पिछले 2 महीने में शॉर्ट सेलर्स ने डोमिनेट किया है, बट वो टाइम भी आता है जब शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट स्क्वीज हो जाता है. रेट तो हो short- जाता है. Yeah. वो टाइम आई गेस आ सकता है अभी. मंडे को पता मेटा चलेगा. प्लैनेट ने फिर से वो स्टॉप कर दिया है उनका मूविंग स्ट्राइक प्रिंटिंग. वारंट फिर से स्टॉप कर दिया है. नाइस. So let's see what happens on Monday if बिलो Bitcoin 1 एमएनएम है क्या recovers. वो? दे आर बिलो 1 एमएनएम. No, they are at one times around. So now if we invest in treasuries, there is only custody risk which is involved. माय माइक इज डन. मेरे बाद Yeah, your voice is clear. आई कैन ओनली स्पीक. सो You can't hear me. लेता हूँ नेक्स्ट. You are on mute. So in this tweet, what Sandra Anderson is trying to say is like Bitcoin treasuries expand their balance sheet. They unlock new form of leverage not only through appreciation but through credit access. So here, I mean, yesterday, me and Bhavik, like, I asked Bhavik about what do you think about credit on a hard money standard? So I am personally doing some research on credit on hard money, theory of money and credit. Bhavik has recommended me some sources, some books, Austrian economics books. So I'm like, I will do the research about how credit will work because uh, unless and until these BTC treasuries are like, if BTC treasuries need to get successful, they have to go through credit. And if they won't go through credit, then it will be hard for them uh, for to grow. So let's see how things go in the coming future. But what he is trying to say is like Bitcoin is pristine collateral and it has deep liquidity. For example, what happened in 2008 was it was crazy when financial bubble housing market collapsed. And at that point in time, uh, the collateral was houses. So a house is not as much liquid as Bitcoin. You have to agree. This is the fact. Like, Bitcoin is liquid 24/7, 365. So if you have an asset which is liquid for like all the time, anytime,
So, like getting credit on that asset will be like will be very easy, and we have to see how these Bitcoin treasuries will use this smart credit to accumulate more Bitcoin and give us Bitcoin yield. So yeah, that this was the basically the post about this tweet. ओके, कैन यू हियर मी? मैं कर लूँ क्या भाविक? हाँ, नहीं, हो गया, हो गया, हो हो गया क्या? गया। सो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाँ, अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ पीटर डनवर्थ एपिसोड इन व्हाट बिटकॉइन डिड। सो वो अपने ही वाज टॉकिंग विद हिज अंकल, ही वाज टॉकिंग विद हिज अंकल एंड उन्होंने बोला कि कि यू कैन नॉट लिव इन बिटकॉइन, यू कैन नॉट लिव इन बिटकॉइन, सो हाउ real estate is good investment but you cannot live in bitcoin, so yeah, it's yeah. not a good thing. So Peter Dunwich said कि the very fact that you cannot live in bitcoin, it makes a pristine collateral Hmm. हाउसिंग। अब जो वर्ल्ड को उन्होंने मस्त चीज बोली कि वर्ल्ड में कोई डेट प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड में Hmm. प्रॉब्लम है कोलेट्रल की। Collateral. सो बिकॉज ऑफ अ बैड कोलेट्रल विच इज यूएस ट्रेजरी, वी हैव दिस मच डेट, $37 ट्रिलियन Hmm. डेट। फेड वो मनी छापती है, इन्होंने गोल्ड हटा दिया क्योंकि गोल्ड का अलग प्रॉब्लम है, लिव इट असाइड, Hmm. सेल्फ कस्टडी वेरिफिकेशन इज हार्ड, सो लाइक उन्होंने वो सारा छोड़ दिया एंड देन दे जस्ट स्टार्टेड प्रिंटिंग। तो उन्होंने डॉलर Hmm. को ही रिजर्व बनाया एंड दे अगेंस्ट दे रेज इश्यू डेट्स अगेंस्ट दिस डॉलर, जो जिसकी सप्लाई दे कंट्रोल। तो वॉल स्ट्रीट ने उसको फाइनेंशियलाइज किया, डेट को नहीं चला सही से, क्राइसिस आए। देन केम हाउसिंग मार्केट, हाउसिंग मार्केट में उन्होंने रियल एस्टेट को भी मॉर्गेज और उनको भी फाइनेंशियल किया, फाइनेंशियलाइज किया। अगेन इट क्रिएटेड फाइनेंशियल बबल, रियल एस्टेट बबल Hmm. 2008 में हुआ। बिकॉज जब आप लाइक यू वांट, जो जिसको तुम कोलेटरल कर रहे हो, देखो डेट्स, यूएस डेट से ज़्यादा अच्छा कोलेटरल वाज रियल एस्टेट। सो जब तुम Hmm. रियल एस्टेट कोलेटरल कर रहे हो, सो तुम उसके बिहाफ में जो तुम मनी इशू कर रहे हो वो तो तुम्हारी बढ़ रही है, बट यू आर क्रिएटिंग द हाउसिंग क्राइसिस, हाउसिंग मार्केट क्राइसिस तुम क्रिएट कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों की जो बेसिक चीज़ है उसको महंगा बना दिया। बट नाउ Hmm. थिंक अबाउट कि तुम बिटकॉइन को फाइनेंस कर रहे हो, सब बिटकॉइन को बढ़ने दो, उनकी डेट की प्रॉब्लम ही खत्म है, लेट द बिटकॉइन राइज एंड उसके कोलेटरल पे तुम सारा फाइनेंशियलाइज करो एंड यू कैन मूव इट ऑल अराउंड द वर्ल्ड लाइक विद इन 60 मिनट्स। 1 आवर Hmm. सेटलमेंट ले लो बिटकॉइन का ऑन चेन फॉर देम, सो 1 आवर इज Hmm. सुपर बिकॉज अभी जो सेटलमेंट है वो 7 दिन 15 दिन है। तो तो दैट इज कितना होगा, 144 आवर्स, 200 आवर्स, 144 आवर्स से लेके यू जस्ट कम टू 1 आवर्स। सो Hmm. 7 डेज, 200 आवर्स से तुम 1 आवर्स में सेटलमेंट में आ गए। बिटकॉइन गिव्स दैट पावर। सो व्हेन दे रिकॉग्नाइज, व्हेन द वॉल स्ट्रीट रिकॉग्नाइज, देन they will issue like trillions and trillions, तो छोटा वर्ड पड़ेगा, like we will need quadrillions, क्वार्टरलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ डेट्स जो एसटीआरसी में आ सकती है, आएगी। But this credit will be what do you think about I mean this type of credit will be 100% backed, or this will again go to fractional reserve, or like इफ now इट this गोस, time we would have an option, like for example, if यस, you are on fractional reserve, some investors might choose to be on fractional, यस, but currently यस, we don't have any option, like we don't have 100% uh, fractional 100% reserve bank, we don't have that kind of bank. So how do you see this thing going, like? yeah, you summarized, you actually summarized. So yeah, like there will be fractional reserve but there will be Hmm. 100% reserve, but the thing is कि there will be transparency and people will get options, yeah, whether you Hmm. want to they will have to show, because now we you got the collateral, so like एमएसटीआर बता रहा है ना कि एसटीआरसी में देयर इज दिस मच बीटीसी रेटिंग, इसमें इतना, सो लाइक Yeah, बट yeah, अभी yeah. क्या है, लाइक इफ यू, अभी सेंट्रलाइज है, फेडरल रिजर्व है या फिर आरबीआई है, Hmm.
they decide rules, and उसके अंदर जितनी banks हैं, they all have same reserve ratio, that is 3% mm, now. Only 3% ratio reserve है उनके पास. उनकी जितनी mm, debt है उनके पास 3% reserve है. That is insane. MSTR mm, has 7,000% reserve. So जब मार्केट को पता चलेगा, when it's the right time, maybe next year, it will next year start होगा, MSTR एंड ये सब इतने हाई प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे कि वो बिटकॉइन को ले भी नहीं पाएंगे. लाइक वो जिस रेट से प्रिंट करेंगे उससे ज्यादा शेयर भाग जाएगा. लाइक वो सोच mm, रहे चलो लेट्स प्रिंट मिलियन शेयर्स एट 2 mNAV. By the time they print it, market like mNAV will be 2.5, 3, 4. So it will eventually pump Bitcoin. But yeah, they will have to they will do it with the sophistication. But yeah, as you said, people will get options key like what product you want, and everyone has Bitcoin, Lightning पे, mm. eCash पे. You have your, and everyone. I guess जो base layer है ना, base layer has enough capacity for everyone to hold their main saving in Bitcoin on chain. Even if the fees is like let's say $1,000 per transaction in 10 years, Mm. people will be able to afford it. Because आज भी अगर आज आज इंडिया में people have their savings in real estate को saving बोलते हैं वो लोग majority. So that is Yeah, start yeah, from like 2 BHK 50 lakh, 1 crore, 2 yeah. crore, 5 crore. तो उसका जो document का charges है, that is again 8%. Yeah, same. agreed. So and people are ready to pay, but they don't, हर बार नहीं करते. They do it for every like Mm, 10 years, 7 years, 5 years में they buy invest in new real estate. And वो इतना बढ़ रहा है, then they are ready to pay 1% fees, document fees. तो बिटकॉइन mm, में भी ऐसा होगा कि like maybe every 2 years, 3 years they move their lightning funds to on chain. So mm, बिटकॉइन तो ऑप्शन है ही फॉर सेविंग के लिए. एंड पीपल के पास अब ऑप्शन है. सो दीज कंपनीज विल नॉट हैव दिस मच लार्ज पीई एमनेम टाइप. सो mm, वो मार्केट में लाइक व्हेन एक वो लास्ट लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा था कमेंट जो बर्नेट का कि व्हेन मार्केट yeah. गिव्स द ऐसी अपॉर्चुनिटी कि यार अब तो यार ले ही लो, अब तो Mm, यार लेट्स सेल सम बिटकॉइन एंड गेट इनटू मेटा पैलेट और गेट इनटू mm, जेट किंग और गेट इनटू एमएसटीआर. देन तो वो दैट या मार्केट विल डिसाइड. एंड इसके बारे में ना ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से बात करी है. लाइक इफ यू सी द mm, क्रेडिट क्रेडिट में जो वर्क किया है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में, सो उसमें ये है. mm, एंड या बिटकॉइन जेनेसिस बुक जो है ना, जेनेसिस बुक उसमें भी एक मस्त छोटा चैप्टर है. आयरन वॉन mm, ब्रेडम की बुक है जेनेसिस बुक. उसमें mm, भी एस्टर्न इकोनॉमिक्स और कार्ल मंगर और फ्रेडरिच हाइक की उन्होंने क्रेडिट साइकिल समझाई है. सो mm. या वहां से मुझे लाइक आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट Yeah, सो. I will also do some research on Austrian economics. Like Bhavik suggested me some books because I am interested in this credit part. So far, I have not gone into depths of Austrian economics. So yeah, stay tuned for our insights. या बिकॉज आपको इंटरेस्ट है ना क्रेडिट में. Yeah, एंड ये एंड mm, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर. लाइक कोलेटरल तो बिटकॉइन आ गया, नाउ व्हाट. तो yeah. Now दैट what? पार्ट्स टाइम रेफरेंस. तो ये सारा Mm, ओशन इकोनॉमिक्स में रिसेंटली मॉडर्न में टाइम वर्क हुआ है. एंड इन लुडविग वॉन मिसेस ने भी काम किया है क्रेडिट पे. mm, सो या यू विल गेट इट. yeah. ऑस्ट्रियन इज आंसर. ऑस्ट्रियन. ठीक है, लेट मी पुल अप द नेक्स्ट पोस्ट. ये हो गया नहीं हुआ ना ये. आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम. Yeah, one of the issues people struggle with the most in thinking about perpetual preferred stock is how to think about the true value of the acquired BTC to common stock in relation to the mounting liquidity preference of preference. As usual, I think it always पढ़ूँ क्या मैं पूरा या फिर आप बता दो. ये If you सिर्फ know. टेबल खोल लो सब समझ में आ जाएगा. Okay, okay. This ये ना. Yeah. Okay. So here, if you can see, guys, currently MSTR is around 300, 320. So what Brian has assumed here in this post is like Bitcoin appreciates by 30% per year. I mean, this can be like this is not linear, but
for our calculation purposes, this is the example. So let's say Bitcoin goes up 30% per year, then how do we see preferreds? So here, like because this MSTR is going up 30% per year, the capacity to issue preferreds also goes up. And also, for example, here on first year, he has like 100,000 of preferreds. I mean, this is the dividend. The principal, principal we have 1 million. So the 10% is 100,000. So for like this is the share sold, the last column, last row. This is share sold, share selling required for covering those dividends. So as you can see, the number of shares which needs to be sold continuously decreases, and this is the reason why we are getting higher MNAV. And this is the reason why preferreds are much more, what do we say, much more accretive to common equity holders than convertible bonds as well. If you can see here, if convertible bonds, which is if there's a convertible bond of similar 1 million, it needs if like if it converts, then 2083 shares like come into total. These get added into the whole total outstanding shares. But if we assume like STRF 10-year dividend, like for after 10 years only 1193 shares will come, and after 20 years only, um, how is this? Yeah, after 20 years, only 1053 are coming. Now you might have doubt like how is the 10 years more than 20 years? So because here he has assumed preferred stock as a bond. So here he's assuming that he will like Michael Saylor will be paying back the initial amount, like initial principal to the preferred holders. But in our case, these preferreds are perpetual in nature. So this thing 227 is never going to get paid back in 20 years. So we can assume that a preferred share is like 1,000 shares will be enough in the whole lifetime to what do we say, to give out dividends. And this is done by calculating MSTR's MNAV at current levels like 1.3 or 1.4. So I I think as of now we have 1.3 times MNAV, and in the post I think he has taken 1 times MNAV. If we can go through a post, go through the post if he has specified about it. इसमें No, earlier one, earlier इसके पहले का. Yeah, here if he has mentioned about MNAV, no, he has not mentioned. So yeah, yeah, basically 320, yeah, 320 looks like one MNF 370 is maybe. at 1.3 or something. Okay. Yeah. So even at these low MNAVs also, preferreds are highly accretive. So I think this is good to understand what preferreds can do. And basically you need to sell first year, like in the first year only you have to sell most numbers of shares in the first 3 to 4 years. And after that number gets decreased, like it decreases by a lot. So yeah, they are selling MSTR shares to pay Yeah. dividends To on cover STRF, right? dividends. Hmm, hmm. Okay. ठीक है, तो इससे ही I will pull up the next tweet because yeah, we need high leverage on treasury companies. Like where it sits perfectly. We need to see a Yeah. massive increase in the use of leverage for the Bitcoin treasuries. The whole point of the exchange is to be leverage Bitcoin play. Metaplan, for example, have BTC rating of 127x, which means that Bitcoin treasury covers their outstanding debt 127 times over. ये वही बात होगी जो हम बोल रहा था कि अभी इतनी है, Uh, इतना होना पड़ेगा इनको, yeah. because it allows pretty much no leverage.
So at least, but अभी 1x level नहीं जा सकते हम because Bitcoin can fall 50%, 60%. So 2x, But 2 to even if 3x, even if Bitcoin falls 50%, still we yeah, are at 60 times. yeah. So 2 to 3 is fine. Three, 4 is super safe. Let's say four Yeah. is super safe. 4x is super safe. Pretty much no, no. Obviously they plan to leverage by preferred, but they may take some time. And जब ये time होगा ना, then this ये जो preferred है ना, this will pull Bitcoin up because ये सारा trillions of dollars will go into Bitcoin by itself. And Bitcoin will cost a million, 5 million, 10 million, and eventually billion in 20 years maybe. We need more leverage. We need more leverage. Yeah. That's it. So अभी people are not ready because लोगों जब interest rate घटेंगे ना, when they start printing, तब when people needs fixed income, Hmm. तब आएगा बिटकॉइन. और जो रिस्क ले रहा है वो बिटकॉइन लेगा, जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है वो STR CST ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में जाएगा. या ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग default on MSTR one times MNAV analysis. Bitcoin Treasury Company are constantly working to increase the Bitcoin exposure per share. This creates another dimension of risk when valuing these companies. However, at different points in time, other substantial value generating opportunities. Math is clear as day, and Bitcoin NGO technology is what affords this opportunity. Since 30 December 2023, Bitcoin is up 199%. MSTR 1 MNAV is 482. MSTR price is 329. These equities aren't broken. They are likely going to the top of the publicly traded leaderboard. Yeah, yeah. It will eat up. So And it takes on time. this chart, Bhavik, if Hmm. you can see here, one times MNAV in 2023 was $52, but today one times MNAV is $271. Yeah. So this is raising the floor of my stock. Yes. Yes. So also, That's for sure. I mean, in this thing, because this is in dollars, this is not in sats. But even if we take take took a look of sats per share, then also it is going up. Hmm. So basically, the goal is to increase sats per share. Yeah. That's for sure. 2023 में Bitcoin was around fifth. No, average Bitcoin 23 30,000 you can take the average price, and $52 now it is. ठीक है. Sets per share is still going up. We need more leverage, but ये कि market fixed income वाले जो है उनको समझना पड़ेगा. Yeah. उनको अभी So तो उनके जब बॉन्ड टूटेंगे ना, उनको उनके लगेंगे बॉन्ड. I mean, and one more thing that needs to happen is basically preferreds getting rating, like by these Hmm. so-called rating institutions like Moody's and S&P and like Morgan Stanley. So if like most probably it will be triple A or double A, most probably Yeah. because no one has these kinds of over collateralization. हाँ. ये ट्रिपल ए होना पड़ेगा इसको. ASST will also launch prefers ना, कि अभी तक वो नहीं हुआ. Yeah, yeah, they will also launch preferreds. But there is very like the thing which we predicted in our maybe when we did Last to STR last. like asset ASST analysis, we are nearly to the pipes levels, pipe unlock levels. But still, don't touch guys to SST because pipe will like in it will put like for example, if daily trading volume is 50 million shares, pipe will put 500 million on that day. So that might be a crazy selling pressure might be still there and it can go Hmm. below one times NAV as well. And they don't have like a lock-in period ना, so that's the problem. Yeah, but I mean lock-in is not there, but I doubt these pipe investors will sell at loss. Hmm. So
we can trade for a long time at one time and because these pipe investors will um, get like look to go out of these investment. This might Hmm. happen. Like, this will also depend who has invested in pipe. Is he long investor or is he here only for the gains? Hmm. That and needs and to be and seen. and, and if he finds some good opportunity elsewhere, तो वो Hmm. निकल जाएगा उसमें, क्योंकि Yeah. if Bitcoin starts pumping and ASST just Hmm. uh, if it cannot outperform BTC, then he will sell and get into BTC. and the- Hmm. and ये अगर लूप में चल गया, then it will like spiral हो गया, then the ASST में there will be pressure. We'll see कितना Hmm. हो पाता है, market how much market can absorb. Yeah. Yes, ठीक है. Moving on to the next thing, I think yeah, only few more posters are remaining. Fixed income investors, digital credit appears materially undervalued. Let me explain. When comparing the yield on digital credit instruments such as STRC, STRF, and STRD to the risk-free rate along the US Treasury curve, the market appears to be materially mispricing risk. Despite offering substantially higher yields than comparable Treasury or corporate bonds, the implied credit spread remain well above what is justified under the conservative assumptions. So, what is trying to say? कि these are The market is credit as spread is too high on these all strategy prefers because if you can see STRC is at roughly 300 basis points higher. STRF is 170. STRD is 300 400 basis points higher. 300 is higher than what? Higher than Uh, Higher than 1 month US T-bill Treasury. equivalent of One US month Treasury. T-bill. Yeah. Okay, okay. Mhm. Because it is 1 month payout. इसलिए उसने 1 month Yeah. से कंपेयर किया है, एंड एस टी हाँ आर एफ हाँ on हाँ. 10 years से किया है. हम्म. Okay. It should be, it is undervalued, जबकि ओवर वैल्यूड होना चाहिए. Even not Yeah. is not even the same. So yeah, it should trade at. Just give me 2 minutes. I will open Yeah. it. Yeah. Yeah. Mm, So in this post, the market still undervalues the collateral value of Bitcoin treasuries. Bitcoin on balance sheet isn't just an asset; it's pristine. I think we have done this. So let's move ahead. I think we have like talked about this. So uh, Bhavik, can you hear me? Hello. yes, can you hear me? Yeah, yeah. If we can So go let us. to the next slide, like I think we have discussed this time Okay, 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 next okay. week. Okay, so next is this S Smarterware company's like Apka. I think, is it your article? Yeah. So recently, SWC has done an institutional raise from a US based investor, wherein they have made a partnership with Maxim Group or Maxim Capital, which is they have made some new connections with US institutional investors as well, and from them they have raised 8 million pounds from this institutional investor in the US, and they have also raised one something around 1.2 million from their ATM styled instrument. So why this is important is because this is the first treasury company who has raised
at zero discount. So if you go around and look into the markets of Bitcoin treasuries, um, there's a ton, like nearly all of the companies were raising the money at like some discount to these institutional investors, but this is the first company who has raised Bitcoin, or who has raised capital at 0% discount. One thing that they have done is like they have given one warrant at 50% premium to these institutions. So, for example, um, if you can go up, Bhavik, here in the warrant section, yeah, warrant kicker. Premium, na? So yeah, so this warrant is at premium, like it can't be exercised unless and until SWC shares go to 1.5 or 50% above the raise price. This warrant will be valid for 3 years, and SWC can force liquidate this warrant if stock trades at greater than 4.5 pounds for 10 straight days. So just one thing here they have done is they have given this warrant option for institutionals. So this has also raised some eyes in the community, because let's say if I invest now in SWC, I won't get any warrant. But let's say if SWC goes above 4.5, and like they will be able to buy share at 1.5. So this is kind of uh, something risk here, a risk out here. But you have to consider the fact that current situation in Bitcoin treasuries is not as good as it was in like 2 3 months back. So that's the reason why they have given this warrant to them. But this warrant is also at premium. It is not at current market price. So I think the deal is fair. So it is good for institution, it is good for retail, and it is good for the company as well. Better than Metaplant. So yeah, it's better. Metaplant gave 10% discount, and already the stock was too down, like it was too down. And on top of that, they give 10% discount. So let's see like where the market goes and how things turn out. Yeah. So this was it for today. Yeah, man. Yeah. Any comments or any questions, feel free to ask. कोई comments आ रहे हैं? अच्छा, कमेंट्स नहीं है। अच्छा, मैं इसमें रह लेता हूँ और I will again take the comments जो भी शुरू में था. I think we all covered everything. Now we go to 115 next. Please do next month. और Bitcoin भी रहेगी ह्यूमन लिक्विडेशन से क्या हमें तो बस तेल निकालना है. Always not clear. Sorry man. Sorry for the setup today. STRC की 10% every per month. Yes. Annually. Distributed Annually. payout is monthly. But yeah, STRC काफी hedge funds को भी आउट परफॉर्म करेगा. There was one post, Yeah. but we couldn't cover because of time limits. But Yeah. yeah, STRC 10% है तो काफी hedge fund, काफी म्यूचुअल फंड को भी आउट परफॉर्म करेगा ये. It Yeah, will outperform most probably S&P 500. yeah. So when S&P market 500 का break up, कितना है? 7-8% तो है ना S&P 500? annually हाँ डॉलर के साथ ही करता होगा ट्रेड. 7-8% है. तो यूएस में यू आर गेटिंग STRC is 10% इज टू मच ना. इंडिया में 10% कम है चलो, बट यूएस में तो ज्यादा है. हाँ, फॉर देम यूएस जापानीज वालों के लिए यूरोप मार्केट के लिए 10% इज टू मच. yeah. सो या, सो बिटकॉइन इज एट Okay. कितना है 112. स्टे हम्बल, स्टे सेट्स, हैप्पी क्रैश टू एवरीबॉडी. ऑल टाइम आ जाएगा तो हैप्पी ऑल टाइम आई भी करेंगे. Yeah. दिस इज द गेम. God bless Bitcoin. गॉड ब्लेस बिटकॉइन. यार आऊँ गॉड ब्लेस बिटकॉइन, गॉड ब्लेस ये सीखने चल रहा है आपके बिना. छोड़ दो. Yeah. ठीक है, कर देना. Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू दिवान. थैंक यू राहुल. Bye. थैंक यू सर.
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। संडे नहीं, मंडे को हमारा बिटकॉइन वीकली होगा। लेट्स फोकस ऑन बिटकॉइन, मी एंड निहाल। एंड बीटीसी स्ट्रेटेजी के हम नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, एवरी सैटरडे Yeah. 3 PM। आज थोड़ा लेट हो गया, बट या जनरल टाइम इज Uh, अराउंड 2:30, 3:30 PM। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस। Number one thing you can do is educate the world on Bitcoin and let people know they need to figure out Bitcoin. And every one of you does make a difference, because I would never get those meetings if it wasn't like someone that went and said, you got to pay attention. And my last point to you, you do not sell your Bitcoin. Thank you. Thank you.